Assalamu alaikum. Dear students, welcome. I am Fakhr Zaman. In today's lecture, we will discuss unit number 1, an overview of communication, lecture part 2, course code 8415. In this lecture, we will discuss communication process, barriers in communication, and types of communication. Dear students, first of all, I'm going to talk about communication process. Before the communication process begins, you create or develop an idea. To communicate the idea, you will use the communication process. The communication process consists of 5 components: the sender, the message, the receiver, the feedback, and the channel. Usually the communication process is interpersonal between persons, but it may occur between a person and a machine, such as a computer. It may also occur between two machines, computers, printers, and fax machine can exchange information. अमूमन अजीज तलबा तलबात, हम जब सोचते हैं कि कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होगा तो हमारे जहन में आता है कि दो पर्सन्स आपस में जो कन्वर्सेशन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, वही कम्युनिकेशन प्रोसेस होगा। बल्कि कम्युनिकेशन प्रोसेस एक बंदा और मशीन के बीच भी हो सकता है, मशीन फॉर एग्जांपल कंप्यूटर के बीच, और इसी तरह दो मशीन्स के बीच भी कम्युनिकेशन का तबादला हो सकता है। लिहाजा हम आगाज करेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस के हवाले से। हमारे पास 5 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दी सेंडर के हवाले से। The sender is a person or thing that originates a message and initiate the communication process. When you are the sender, you have major responsibility in communication process. आप जब एक कम्युनिकेशन का आगाज करते हैं तो आप पर एक अहम जिम्मेदारी ये होती है कि आपने कम्युनिकेशन को किस तरह लेकर चलना है, क्योंकि आपके मैसेज से ही कम्युनिकेशन का आगाज होगा। अजी साथियों, अब हम बात करेंगे द मैसेज के हवाले से। A message is composed of a set of symbols. These symbols can be verbal or non-verbal. ये वर्बल भी हो सकते हैं, नॉन वर्बल भी हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्बल सिंबल्स के हवाले से। Verbal symbols are words used when speaking or writing. Letter, memorandums, reports, brochures, catalogs, manuals, and annual reports are composed of verbal symbols. These symbols are also used when speaking face to face or on the telephone, participating in a conference or meeting, or delivering a speech. सिंपल ये है कि अगर हम वर्बल सिंबल्स की बात करें तो वो हैं अल्फाज। आप जब बोल रहे हों या आप कुछ लिख रहे हों, मतलब जिस तरह की भी कम्युनिकेशन हो रही है, तो उसमें अल्फाज का इस्तेमाल verbal symbols कहलाता है। Non-verbal symbols such as gestures, posture, face expressions, appearance, time, tone of voice, eye contact, and space always accompany verbal symbols. Whether you realize it or not, you use non-verbal symbols to send and determine attitudes. अब जहाँ पर आप gestures, postures, फेस एक्सप्रेशन और इस तरह का इस्तेमाल करते हैं, उसको नॉन वर्बल सिंबल्स कहा जाता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर मैसेज, ऑलमोस्ट तमाम मैसेजेस contains non-verbal symbols that help the receiver interpret verbal symbols. ये एक आसानी रिसीवर को पहुंचती है, जिसको मैसेज मौसूल हुआ है, वो इसके थ्रू आसानी से मैसेज का मायने मालूम कर लेता है। अब अगर कंफ्लिक्ट हो वर्बल और नॉन वर्बल सिंबल्स में, तब क्या किया जाएगा? तब रिसीवर्स जनरली
leave the non-verbal symbols or the verbal symbols. क्योंकि अक्सर बात आपने एक मैसेज लिखा है, अब वो मजाक के अंदाज में है या आपने सीरियस मैसेज किया है, अब नॉन वर्बल सिंबल से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस मैसेज की नौयत क्या है। तो इन दोनों में जब कन्फ्लिक्ट हो तो यकीनन आप नॉन वर्बल सिंबल्स पर ही ध्यान देंगे। अजीज तलबा व तलबात, सिंपली ये है कि मैसेज दो टाइप का होगा, या वर्बल सिंबल्स पर मबनी होगा या नॉन वर्बल सिंबल्स पर। इन दोनों को मिलाकर ही आप मैसेज करते हैं, और वर्बल सिंबल्स में वर्ड्स का इस्तेमाल, नॉन वर्बल सिंबल्स में आप जेस्चर, पोस्चर्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की जानिब, और वो है द रिसीवर। A person or thing to whom a message is sent is the receiver. When you are the receiver, your responsibility is to give meaning to the verbal and non-verbal symbols used by the sender. The meaning receivers give to message depends on their respective educational backgrounds, experiences, interests, opinions. यहाँ पर आम बात यह है कि रिसीवर पर जो जिम्मेदारी आयद होती है वो उस मैसेज को मतलब देगा, वर्बल और नॉन वर्बल सिंबल्स को देखते हुए और पढ़ते हुए, यानी नॉन वर्बल सिंबल्स को वो देखेगा और वर्बल सिंबल्स को वो पढ़ते हुए उसका मायने निकालेगा। यहाँ पर यह है कि जो मतलब रिसीवर निकालेगा वो डिपेंड करता है जो आपको मैसेज भेज रहा है उसके, और जो रिसीव कर रहा है उसके एजुकेशनल बैकग्राउंड, एक्सपीरियंसेस, इंटरेस्ट, ओपिनियन के हवाले से। अमूमन इसमें सेंडर के हवाले से हम बात करेंगे कि उसके एजुकेशनल बैकग्राउंड, एक्सपीरियंसेस, इंटरेस्ट, ओपिनियन के हवाले से आप अंदाज़ा लगाते हैं, मीनिंग लगाते हैं, क्योंकि अमूमन मैसेज आएगा तो आपके जहन में उसके हवाले से, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड या एक्सपीरियंसेस, इंटरेस्ट वगैरह के हवाले से ही आप उसका मायने निकाल सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं द फीडबैक की जानिब। फीडबैक इज द रिस्पॉन्स ऑफ अ रिसीवर टू अ मैसेज। Feedback may be non-verbal, a smile, a pause, or it may be verbal, a telephone call, or a letter. Any response, even no response, is feedback. यानी आप किसी को रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, आपको कोई मैसेज रिसीव हुआ है, आपने जवाब ही नहीं दिया, तो ये आपका एक फीडबैक हुआ, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप बात करने के मूड में नहीं हैं, या आप इग्नोर कर रहे हैं, या अगर आपकी किसी से कोई कन्वर्सेशन आप करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, और उससे पहले आपकी उनसे कोई नाराज़गी है, तो उस सिलसिले में अगर जवाब नहीं आता तो ये फीडबैक हुआ। या इसके अलावा भी आप अगर कोई जवाब नहीं देते तो ये भी एक फीडबैक है। Feedback is a critically component of your communication because it helps you determine whether the receiver has understood the message. अगर आपको रिसीवर कंफ्यूज दिखाई दे नॉन वर्बल फीडबैक से, यानी कि अगर आपके सामने मौजूद है, कम्युनिकेशन कर रहे हैं और उसके चेहरे से आपको लग रहा है कि कंफ्यूज्ड एक फीडबैक मिल रहा है, या मैसेज के थ्रू, नॉन वर्बल फीडबैक के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू आपको फीडबैक दिया जा रहा है, तो you know that you need to clarify, provide additional information, or modify the message. To be meaningful, feedback must accurately reflect the receiver's reaction to the message. और अब हम बात करेंगे लास्ट कंपोनेंट की, और वो है the channel. The mode a sender selects to send a message is called the channel. अब ये चैनल जो है वो सेंडर भी इस्तेमाल कर सकता है, और रिसीवर जब वापस दोबारा फीडबैक भेजेगा या कुछ लिखता है तो उसको भी चैनल यूज करना होता है। तो द मोड sender selects to send a message is called the channel. Letters, memorandums, and reports are the most common channels for written messages. One-to-one conversation, telephone conversation,
and meetings are common channels of oral messages. Email, video conferences, and voicemail are common channels of electronic messages. अजीज तलबा व तालबात, ये हम बात कर रहे थे कम्युनिकेशन प्रोसेस के हवाले से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जानिब, और वो है बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। अजीज तलबा व तालबात, बैरियर्स में सबसे पहले एक्सटर्नल बैरियर और फिर इंटरनल बैरियर्स। पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल बैरियर्स के हवाले से। Conditions outside the receiver and the sender that detract from the communication process are called external barriers. Examples include environmental factors such as lighting, heat, humidity, comfort, and noise. The appearance of a written document also may be an external barrier to communication. A document can create an external barrier if it contains errors in content, spellings, or grammar, or is presented in an inappropriate format. You could become so distracted with the appearance of the document that you fail to comprehend its contents. Dear students, another external barrier to communication within an organization is a closed climate. In such an environment, अब अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हाई मैनेजमेंट ही पॉलिसीज पर कोई भी सजेशंस वगैरह ना लें और वर्कर्स की जो सजेशंस हैं उनको कोई वैल्यू ना दी जाए, तो फिर इस सिनेरियो में वर्कर्स जो हैं वो अपनी सजेशन देना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनकी सजेशंस जो हैं वो यूजलेस हैं, उस पर कोई अमल नहीं होगा, उसे कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। लिहाजा इस सिनेरियो में वर्कर्स जो हैं वो कभी भी सजेशंस नहीं देंगे, क्योंकि हाई मैनेजमेंट उनकी सजेशंस को लेना ही नहीं चाहती। और इसी तरह अगर ओपन क्लाइमेट, ओपन इन्वायरमेंट हो जहाँ पर के which ideas and information are welcomed, communication flows easily. यानी हम ये कह सकते हैं कि workers feel that supervisors and management are receptive to their ideas, which facilitates communication. तो इस सिनेरियो में एम्प्लॉयज इनकरेज होते हैं और आइडिया देना पसंद करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये एक जो एक्सटर्नल बैरियर्स में एक चीज़ ये है कि ओपन क्लाइमेट, ओपन इन्वायरमेंट होना चाहिए, न कि क्लोज्ड क्लाइमेट होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं इंटरनल बैरियर्स की जानिब। इंटरनल बैरियर्स, people have different personalities, educational backgrounds, experiences, cultures, status. The internal barriers affect a sender's willingness and ability to express messages and a receiver's ability to interpret them accurately. अब इसकी दो एग्जांपल्स हैं, दो सबसे बड़े बैरियर्स हैं। यानी अगर किसी एक मीटिंग में बहुत सारे लोग आउटस्पोकन होते हैं जो कि शाय नहीं होते, वो बोलते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और इसी के अगेंस्ट कुछ शाय इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि शर्मीले होते हैं, जो कि अपनी बातों का इजहार नहीं कर पाते जब तक कि कोई उनको कहे ना कि आपने बोलना है। So one-to-one conversation is easier for extroverts than introverts. To avoid becoming a communication barrier, extroverts need to make sure they think before they speak. For introverts, to avoid becoming a barrier, they need to make sure they speak. Another barrier ये है कि आपके इंटरेस्ट के हवाले से अगर गुफ्तगू ना की जाए तो आप कभी उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे। यानी लेट सपोज किसी को अगर क्रिकेट से कोई लगाव ही नहीं है और उससे क्रिकेट के हवाले से कम्युनिकेशन की जाए तो यकीनन उसने उसमें कोई इंटरेस्ट लेना नहीं है। तो ये आपका सबसे बड़ा बैरियर है कम्युनिकेशन में। अजीज तलबा व तलबात,
अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के हवाले से। इसमें एक्सटर्नल एंड इंटरनल कम्युनिकेशन होती है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, एंड रिटन, ओरल एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। सबसे पहले बात करेंगे हम एक्सटर्नल एंड इंटरनल कम्युनिकेशन के हवाले से। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन originates within a company and is sent to receivers outside the company. Communication with clients, customers, sales representative, governmental agencies, advertising agencies, and transportation agencies outside the company is external. And internal communication originates and is sent to receivers within a company. For example, a memorandum from a supervisor to an employee is an internal communication. अगर हम बात करें फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के हवाले से, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन occurs through established lines of authority and can be written or oral. Communication may travel down, across, or up lines of authority. Communication that travels down from a supervisor, superior supervisor, managers, or executive to subordinates is downward communication. Communication amongst persons of the same status is lateral communication. A memorandum from one department head to another is an example of lateral communication. Upward communication refers to communication from subordinates to supervisors, when employees convey to their superiors suggestions for improving production. Informal communication. Informal communication does not follow established lines of authority. It may be written or oral, sharing interest over lunch or during breaks. वो कम्युनिकेशन जो कि आप ड्यूरिंग ब्रेक में आप किसी से गुफ्तगू कर लेते हैं, कोई कन्वर्सेशन कर लेते हैं, तो इसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहा जाता है। अजीज तलबा तलबात, अब हम बात करेंगे रिटन, ओरल एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। Letters, memorandum, and reports are common forms of written business communication. Letters are external documents that may be addressed to business associates, customers, and clients. Memorandums, often called memos, are internal documents used to communicate with one or more co-workers. Reports are designed to provide meaningful information to a group of people. They may be formal document, agendas, minutes of meetings, speeches, brochures, business directories, legal documents, office manuals, and announcements are other form of written communication used in business. Generally, oral communication can be sent quickly and provides immediate feedback to the sender. You may use oral communication, one-to-one conversations, and telephone conversation when seeking opinions, explaining procedures, providing counseling, or building relationships. Okay, written messages may be composed, edited, and transmitted on computers. These written electronic messages are forms of electronic mail or email. These messages may be internal or external. अजीज तलबा व तालबात, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अजीज साथियों, in today's lecture we talked about the communication process, barriers in communication, and types of communication in unit number 1, course code 8415. We will discuss the remaining topic in part 3 lecture. Dear students, thanks for all of you. Now we will meet in next lecture. Till then, Allah Hafiz.